go to the switch statement that in previous class we have discussed. The switch is a statement where you have to take a sample value and check with the multiple conditions. It's just like that you are going to the restaurant and you check for the item that you want. तो मु रेस्टोरेंट गली गोटे आइटम धर मते खाइबार अछि मु जाकी से लिस्ट भितर चेक करी जे पर्यंत से आइटम टा मु न पाइची मोर ता भितर मु सर्चिंग करी चली सर्च करी तो वंस जदि मो पाखे 10टा पेज अछि जदि मु थर्ड पेज रे मोर डिजायर आइटम टा पाई गली मते आउ नेक्स्ट पेज रे सर्चिंग करबा दरकार नै तो आई हैव टू सर्च आई हैव टू स्टॉप फॉर देयर मु सेठी स्टॉप हे जिली and I want to search for item if it is not present in that list the menu item is the list present not even then the manager will come and ask so today we are not having that item we have the special item for today this is our special item you have it okay so that is means if the item that is not available then the manager asking for the default item that is present in the hotel. So that is actually called as what in the switch case it is happening. In switch, you have to take a value. So the value that you have to take it is passed in this expression. And the value that you are passing in this expression, it is matched with the case statement. Case 1, case 2. The which value is matched with any case statement, the corresponding statement is executed. Case 1, if matched, then statement. Case 1, if matched, then statement. If the value is matched, then the corresponding case statement is executed. If your value is not matched, then the default case is executed. Okay, if the value is not matched, then the default statement is executed. Okay, so first of all, आमर जो केस आमे जो वैल्यू टा नबा जदि कोनोसी केस स्टेटमेंट से मैच हेई जाउची इफ एनी केस स्टेटमेंट इज मैच then ultimately we are not searching for the another case statement so that the break will appear. Okay, so the break has come to here. Okay, so there is no break statement is required in default case. Default रे कोनोसी break statement हमरा दरकार नै. In every case statement we have to require a break statement. If you are not mentioned the break statement, the flow of control is going to the next case statement. यदि हमें break न लिखिबा हमर flow of control टा next case statement को पड़ेगी. Until the break is reached, एमती हमर flow of control टा चलेगी. The following rules apply to the switch statement. What are the rules? The expression used in the switch statement must have an integral or enumerated type or be of a class type in which class has a single conversion function to an integral or enumerated type. You can have any number of case statement within the switch. The switch भितरे मु any number of case statement पकेई परिबे. Each case is followed by the value to be compared and followed. हमें जो value टा नबा जहाँ से compare करिबा एटा case statement रे हमें mention करिबा. When the variable being switched on is equal to the case, the statement following the case will execute until the break statement is reached. हमें जो value टा नबा जो variable टा नबा से ultimately case statement को खोजिबो माने कोठी मैच करियो. जदि जे पर्यंत मैच न करिछि एमती सर्चिंग चलिबो जे पर्यंत ब्रेक स्टेटमेंट न आसे. And when you take a value हमर जो केस रे जो कांस्टेंट लिखाबो तो केस देन केस 1 केस रे जो वैल्यू टा पास करिवा that value data type is must match or equal to the switch statement. Switch रे जो parenthesis अछि जो वैल्यू नबा तार डेटा टाइप जहा रहिबो केस स्टेटमेंट रे डेटा टाइप सेम रहिबा दरकार. Not every case, okay, not every case it is like when a break statement is reached the switch terminates. Break means stop over there, stop your searching. Not every case
needs to contain a break. If no break appear, the flow of control will fall through the next subsequent case statement until break is reached. तो जे पर्यंत नेस्टेड स्विच केस क्या हो स्विच केस भीतर स्विच केस रहबो ମାନେ ଯଦି ସୁଇଚ କେସ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଚ କେସ୍ ମାନେ ଯଦି ଇ ବେଲ୍ ଦରକାର ଅଛି ମାନେ ଦିଟା ଇ ବେଲ୍ ଦରକାର ଅଛି କେମିତି କରିବି दीटा इफ एल्स रहबो सेटा एल्स इफ रहबो हां स्विच केस रे मल्टीपल काइंड डिफाइन हम खाली हम फंक्शन रे यूज करे पड़ो हेई परिबो किंतु फंक्शन थ्रू रे करियो स्विच ଯଦି ମଲ୍ଟିପଲ ସୁଇଚ ରହିଲା ତ ଦେନ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରେ ହେଇଗଲା ବ୍ରେକ୍ ରହିଲା ସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମ୍ପ କରେ ଆରଟାକୁ तो तार सर नेक्स्ट पार्ट को जीवो प्रोग्राम ମାନେ ଆର ଇ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଇ ର ଗୋଟେ ଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ଯଦି ନ କଲା ତାହେଲେ ସିଏ ପଳେଇଲା ଏଲ୍ସ यार सेमती सुइच যদি ସବୁ କେस କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ ହେଲା ସିଏ ଯିବ ब्रेक डिफॉल्ट को जीवो ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁ ଯିବ ଦିଟା डिफॉल्ट देखियो तापर सेटा सर गले पुनी नेक्स्ट स्विच केस को जीवो A switch statement can have an optional default case which must appear at the end of switch. The default case can be used for performing a task when none of the cases is true. No break is needed in the default case. Okay, so now I show you the small program. Java is. सर ये जो इंट में ना वर्ड में डिफरेंस Void main means void is a return type. ମାନେ ସେଟା ଲେଖିଲେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଜିରୋ କେ ପଡିବ से void ର अर्थ होची हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करिवो हमको कोनोसी वैल्यू रिटर्न करिवो if you are expecting your function will return some value हमें जदि एक्सपेक्ट करूचे जे हमर फंक्शन टा किछि वैल्यू मते रिटर्न करके दबो जदि मु एक्सपेक्ट करूचे जे मते इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके दबो तो आई हैव टू राइट int बुझला एटा मेन मेथड तुम जानि परिबो हम मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन करिवो सेठी जानि परिबो सेटा हम पढिया तो से कोइ हां अछि int norm is equals to 200 switch norm printf ठीक है दोस्तों दरकार नहीं so here I pass case 100 एठी हमें जहा डाटा टाइप नबा ए केस रा वैल्यू टा भी से डाटा टाइप रहइबो केस 100 देन एठी हमको शो करिवो int century break सर
जो केस है स्विच एगुड़ा सब कौन से प्रीडिफाइंड फंक्शन प्रीडिफाइंड कीवर्ड फंक्शन कीवर्ड केस 200 double century multiple case statement हम पास के case 300 is showing you triple century default invalid entry. So here I miss break. 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 हम पास करचे 200. 200 is matched with the 100. No, 200 is matched with this one. Yes. Then showing you double century. If I pass 300, then it is matched with this one. So it is showing you triple century. If I pass customer नहीं करो नहीं printf नेला तो मैं हमें scanf यूज करियो मैं ଗୋଟେ सिंपल प्रोग्राम देखौची तापर नेबो 400 पास करियो this is invalid entry now एबे हम आउ किछि जिंसटी यूज करूची सपोज मैं एटी ब्रेक हटे देबी I give here comment एटी भी comment means the brake is inactive तो एटी भी ब्रेक inactive है then what it will display किछि ब्रेक जदि हम यूज न करियो it is showing you invalid entry सॉरी मुझे यदि 100 भी पास करियो सब देखला सेंचुरी डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी इनवैलिड ओके मैं सेंचुरी डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी इनवैलिड एंट्री ओके स्लैश n स्लैश n स्लैश n सेंचुरी डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी इनवैलिड एंट्री आम ब्रेक जदि न करियो सब जगह डिस्प्ले करियो सपोज मु पास करिछि केते 100 पास करिछि मो ट्रिपल सेंचुरी ब्रेक टा हटेबी ओके सेंचुरी डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी पर स्टॉप हो गया इनवैलिड टा दिखेला ओके so that means if we remove the break then nothing will be execute माने सब जगह शो कर दियो बुझला
Next is suppose I'm passing which one is a vowel and which one is a consonant. ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ define କରିବା सर ये हम लिखेंगे ना କୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି କରିବ character na printf enter time ଦେଖନ୍ତୁ percentile na so ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଓ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ go ଆପଣ ପୁଣି କହିଲେ ତାକୁ 6 ଦିନ କହିଲେ ପୁଣି କହିଲେ 7 ଦିନ କହିଲେ switch na printf printf ଏଇଟା ତ ସରିଲା ଆଉ printf କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରହିଲା case a
ब्रेक लिखी किसी दरकार माने जो कोच हां मैं कहि जाना ए ई समतन ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥାଉ हां ए आई ओ यू ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ ତାପରେ ଅଲଗା ଗୁଡା गोटे ଡିଫଲ୍ଟ ରହିବ। टीचर वाले जो पढ़ाउछन्ती ए सब प्लस 2 पर की कोडी पीजीडीसी करछि सेही टीचर माने पढ़ाउछन्ती सी जा पढ़ेइबो मार्केट को पूरा बर्बाद कर देछि पगड़ा ପୁଅ ପିଲା ଟିଚର ନା ଖାଲି ଝିଅ ପିଲା काम नहीं ना अभी कौन करिए धीरे ସେ ଜଣେ ହେଡ ମ୍ୟାମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଚାରିବି ମ୍ୟାମ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଏଟା କେମିତି ए ई आई ओ ए ई आई ओ छाड़ दीजिए ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଲାସ୍ ନିଆ ହଉଥିଲା ସେ କଣ କହିଲେ ପାଠ ଘରେ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକ हाँ सीरी बाबू तुम तो किधर ए कौन ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ସେଠି ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ सी ମୁଁ ମଝିରେ ଜଣେ ରଖିଥିଲି କଣ କହିଲି ବଡିଗାର୍ଡ କିଏ ସୁରେଶ ସାର୍ କିଏ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଡିଗାର୍ଡ ସେ ମୋ ପଟେ କାମ କରୁଛି ନା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରବଳ ଲିପଷ୍ଟିକ ଗୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଲିପଷ୍ଟିକ କରନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରନ୍ତି ଆରେ ମାନେ ସୌର ସାର୍ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରନ୍ତି ହଁ ଆଉ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମରେ କଣ ସାର୍ ଏତେ ଗୋଲାପି लिपस्टिक हमारे ये देखो AEIOU ଆଜ୍ଞା it was the default case okay so enter any letters ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଠି ସ୍ଲାଶ ଚେନ୍ ୟୁଜ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଟର ହବ ଓକେ ସ୍ଲାଶ ଚେନ୍ ଫର ଦ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ କରିବୁ ଏଇଗୁଡା କରିବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଏଇଟା ଅନ୍ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦେଇଦେବି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଇଦେବି सपोज मु पास करी टी कन्सोनाट माने आ भीतर किसी मैच कलानी एटा कोन पे एंते लिखा हला ना ईच केस स्टेटमेंट रे हमें प्रिंटफ यूज कलेनी अच्छा एठी आउटे भूल हला आउटे भूल हला मैं ब्रेक लिखिनी बुझियो ब्रेक नन लिखे नो प्रॉब्लम ए बेस मैं पास करिवा सपोज ए पास करिवा ए हेले भावेल आसीबो ओके ए आसले भावेल आसीबो
देन सपोज मु पास करी आर पास करी the consonant ने आज all these character a e i o u all are vowels माने यही सब नंबर all are माने यही सब केस स्टेटमेंट पे हमें गोटे सेम स्टेटमेंट टा प्रिंट करिवा सेते पे एकादरे ना ए ई आई ओ पांचटा लेवल दे तेल कोन एकादरे ए ई आई ओ एंड लिखि दे एकाथरे लिखाई छी ना ना नहीं आपण ले ना माने एडी जो गोटे केस देखि गोटे देखि सब लिखि दे गोटे केस मो ए जो आउटपुट नै सर जो कहू एंटर एनी लेटर केम ना हमें पे कैरेक्टर एन दे छी गोटे कैरेक्टर नबो फास्ट कैरेक्टर मो पांचटा कर फास्ट कैरेक्टर टा नबो एन ए माने गोटे ही नबो हां कैरेक्टर माने गोटे कैरेक्टर हमें जदी साइज दबा ताले धर 4 5 दबा ताले चारटा कैरेक्टर नबो बुझले गोटे देखिए कोन गोटे दी तीन ने वार्ड ने गले लेटर दी तीन ने वार्ड लेटर नहीं मु ई देबी ई परे बाबे ईटा हिनला नहीं एटा ईच केस स्टेटमेंट पे हमें गोटे प्रिंट स्टेटमेंट लिखिबा तो सेते पे एटा यूज करियो बुझी पर सुबश्री ना नहीं बुझी हलानी हेलो सर यस सर तुम्हें लिखो एंटर क्वेश्चन लिखा उडे एंटर एनी ऑपरेटर enter any operator like plus minus multiplication division division and yes sir take two number and find out the result हमें कौन से गोटे ऑपरेटर एंटर करिवा आ दि नंबर एंटर करिवा तर से करेस्पोंडिंग वैल्यू सब माने यूजर यूजर गोटे सिंबल दबो प्लस माइनस आ दिटा नंबर दबो तो जदी प्लस देछि तले एडिशन हो माइनस होछि हैला ठीक करिवो नेक्स्ट आउटे देखो तो जेटा कहले एटा केम रे फास्ट प्रिंट टेप स्कैन टेप गोटे अलग रहिबा ता परे स्विच केस भितरे write a program for automated telecommunication system write a program for automated telecommunication system telecommunication system if the user press 1 then if user press 1 going to the customer care department when user press 2 customer care press 2 account information press 3 change plan and if any other name if any other number has passed then it is showing you then it shows invalid entry okay एते करियो एते करी कल्याणी invalid एंट्री entry एटा होची होमवर्क खाता रे करिवो काली मु ऑनलाइन ने तुमर प्रैक्टिकल ने भी काली लैपटॉप रे कनेक्टेड करिवो हैला
ओके सर। चलो बाय सर। बाय।